In a village called Vajdi in Rajkot, Gujarat, a group of entrepreneurs, engineers and technicians are working harder and faster than ever before to install a spanking new state-of-the-art potato wafers production line. बाहर से जो इंजीनियर्स है वो नहीं आ पा रहे हैं, तो ये प्लान हमें हमारे खुद से उसको सेटअप करना है और अच्छा प्रोडक्शन निकालना है। तो इस बार थोड़ा सा चैलेंजेस है, बट वी आर एक्सपर्ट। Shrugging off a pandemic that made them shut shop briefly. फैक्ट्री में हम चक्कर लगाते तो सुनसान भास आता है कि जो हरा भरा फैक्ट्री डेली 24 घंटा चलता और अचानक उसको बंद करके काफ़ी दिन बंद रखना पड़ा। The team of Balaji Wafers has to bring its A game, racing against time to pull off a unique commissioning just in time for the festive season in India. I'm confident online commissioning will work very well for Balaji this time. एक लंबी रात है तो एक लंबा दिन भी आएगा। Balaji Wafers is one of India's leading snack food manufacturers, set up in 1982. The company has factories in 4 locations across 2 states in India. Rajkot, Valsad and Vadodara in Gujarat and Indore in the state of Madhya Pradesh. The company makes over 50 varieties of products, from Western snacks like signature potato wafers to nachos and pop rings, to the very Indian snacks like sev murmura, chioda, chana dal and various kinds of namkeens. It's a $315 million Make in India brand that is a market leader in potato wafers and salty snacks, especially in Western and Central India. Started by Chandubhai Virani and his brothers, the company's day-to-day operations are now being handled by the next generation of Viranis. But it's not just another day at work for Keyur Virani as he scans the factory floor at Balaji Wafers in Rajkot, Gujarat. ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। हमने ये जब लगाया तो थोड़ा Keyur and his band of technicians and engineers have their hands full with a project that has been over a year in the making. ऑलमोस्ट स्लाइजर फिटर हो जाएगा। They have missed all internal deadlines, but this is the last one they are setting for themselves. Getting it up and running for the festive season, which is just weeks away. The team is in the process of installing a new potato wafers production line, the PC42, something that should have been easy to do considering Keyur and his family have been in the wafer and snack making business for the last 4 decades. The new production line is going to be a critical addition to the growing capacity of potato wafers production at Balaji's and in line with the state-of-the-art technology that churns out their snacks and savories. ये एरिया में जो ग्रोथ की डिमांड आ रही है, पर्टिकुलरली जो पोटैटो चिप्स में, तो वो डिमांड को कैटर करने के लिए अगले 5-7 साल का फ्यूचर का डिमांड को कंसीडर करके हमने ये प्लांट डिज़ाइन किया हुआ है।
1500 કિલોની ડિઝાઇન હોય એમાં Despite decades of experience behind the family-run business, 2020 is turning out to be a year with a challenge so unprecedented that Balaji Wafers was not the only ones caught by surprise at a sudden move that stopped everyone in their tracks in the month of March. ये लाइन तो समझो 4 महीने 5 महीने पहले शुरू होने वाली थी, तो लॉकडाउन वजह से एक जगह पे रुक गया और सारा समझो आ गया, तो काफ़ी इंजीनियर लोग नहीं आ सके, तो इसकी वजह से कम 4-5 महीने ये हमारी लाइन लेट हो गई। Right now, coming in through the wide doors of the factory are various components of the PC42, one of the most advanced potato wafers making lines in the world. The parts come in all sorts of shapes and sizes and need to be brought into the factory floor with tremendous amount of coordination and care, as even the smallest dent can throw assembly off gear. हमारा नई पोटैटो वेफर लाइन का इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें सभी क्रिटिकल इक्विपमेंट रहता है, उसको वेरी केयरफुली विदाउट डेंट उसको प्रिकॉशनरी हमें नीचे रखना रहता है। A potato wafers production line can broadly be divided into 3 parts: potato processing, the frying system, and seasoning and packaging. Altogether, there are nearly 300 moving parts that will complete the jigsaw called PC42. And when finally assembled, it can process 200,000 kilos of potatoes a day to make 60,000 kilograms of potato wafers daily. The new line will help increase the company's overall production capacity to 200,000 kilos of wafers per day. With daily production capacity of nearly 6 million packets of potato wafers a day, they could produce enough packets in a year. When put back to back, they would go around the earth more than 8 times. Since early 2020, machines for the new production line were shipped to Rajkot from all over the world: the US, Japan, Netherlands and Australia. प्रोडक्शन कॉस्ट को आपको अगर रिड्यूस करना है और आपको क्वालिटी इम्प्रूव करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मशीनरीज और ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन में आप जाएंगे तो ह्यूमन एरर को आप एलिमिनेट कर सकते हो। Balaji Wafers regularly imports from the world's top food processing suppliers, staying true to their philosophy of investing in the best automation deployed in the food industry. It was a lesson Chandu Bhai learnt very early in his life, when his brother and he manned the canteen at Astron Cinemas in Rajkot in the 70s. गांव में कुछ था नहीं, 2 रोटी की चिंता थी, बारिश होती नहीं थी, कृषि रिलेटेड मेरे फादर का काम था, तो चिंता नहीं चिंतन करके हम राजकोट आए 1974। अच्छा काम किया तो हमने 2 साल में कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी, तो हमारी हो गई कैंटीन। फिर हम बाहर से लेके माल बेच रहे थे, तो सप्लायर अच्छी नहीं हो रही थी, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी, तो सोचा कि चलो हम खुद बनाए। Chandu Bhai started frying wafers himself at home, and with the help of family would manually pack them and sell them to patrons at the cinema and a few other outlets. But he saw the pitfalls of doing things by hand, an inconsistency in the product and a shorter shelf life. अच्छा माल बनाना है तो कैसे बनाना? ऑटोमेटिक डालना है। पूरी समझ नहीं थी, बस ऑटोमेटिक डालना है। मशीनरी एक बार महंगी पड़ेगी, लेकिन वो मशीनरी समझो 24 घंटे में कभी रुकेगी नहीं। हमारा मेन मकसद है यही है कि एक बार महंगी चीज़ लेनी चाहिए, कि वो महंगी चीज़ों की वजह से आज 4 लोगों की चेन टूटती नहीं है। अगर चेन टूटती है कंज्यूमर की, तब एक विश्वास हमारे ऊपर से उठ जाता है।
Conventionally, a team of engineers from the manufacturer's end work alongside the client during an installation and commissioning. But this year, COVID-19 has redefined life and work for man and machine alike. पेंडेमिक के कारण काफ़ी दिक्कत हुआ है और एक तो ये हमारा जो प्लान बेसिकली जब हमने प्लानिंग किया था पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था, पर आज हम लेट चल रहे हैं। चैलेंजेस तो है पर इससे एक सीखने को भी मिल रहा है। The team is going through a huge learning curve as they try to put together the new production line without the experts' presence. The elevator and destoner, a part of the plant that removes stones from the potatoes that could otherwise cause severe damage to precision components in peelers and slicers, isn't quite fitting in its place. The elevator should be angled precisely for it to fit in. ये एलिवेटर है ना, वो थोड़ा क्रिटिकल है, तो उसका जो एलिमेंट रहता है, जो उसका जो एंगल रहता है, वो परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो एक बार हम ड्राई रन करके ट्रायल लेंगे, उसके बाद ही हमको परफेक्ट मालूम पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है। But during assembly, the team seems to have gone off by a few degrees. डीले चल रहा है मेरे टाइम से, लेकिन वो रात को लेट तक करेगा आदमी, सुबह तक चालू करना है मेरे को। अभी ट्रायल करना है, सीधा चालू तो नहीं हो सकता। Yogesh has made few changes to the angle of the elevator and keeps his fingers crossed that it bides well during the testing phase, which will happen in a few days. अब ट्राई कर रहे हैं कि जितना बने उतना हम फास्ट काम करें। There's a lot that goes into making the perfect potato wafer, from the size of the potato to the way it's handled, scrubbed, treated, fried, seasoned and packed. Balaji Wafers uses specific varieties of potatoes that are suitable for manufacturing wafers. Right now, a big batch is getting unloaded and the first thing to get done is a random quality check. मैं रैंडम आलू के सैंपलिंग में से ड्राई मैटर कर रही हूँ और इससे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता चलता है और इससे हमें ड्राई मैटर मिलता है और अच्छे आलू में हमें 21 से 23% ड्राई मैटर मिलता है। Potatoes consist of around 80% water and 20% dry matter. The higher the dry matter value, the better the potatoes are for making chips. This batch of potatoes gets green lit and the produce travels up conveyor belts where they are dropped into silos for storage. At Balaji Wafers, there are 16 silos that can store 480 metric tons of potatoes. From here, it goes into a grader which weeds out the subpar potatoes that are possibly too small. From there, they get dumped into a rod washer for a good scrubbing down. The potatoes get fed to a peeler. And from there, the peeled potatoes go into the halver where the extra large ones are halved. From here into a sorter where deformed or spoilt potatoes are discarded. Next, the potatoes are ready to get sliced. वहाँ से उसको फिर एयर से उसको सुखाया जाता है और सीधा ही उसको फ्रायर में भेजा जाता है। And the wafers are fried before they get seasoned with Balaji's in-house flavors. From here, it's up and away into metallic structures called multi-head weighers, from where they fall into various batches to be sealed into packets ready to hit the road for customers. We can supply with the sorter and recommended. For the first time in Balaji Wafers' history of plant installations, the company is going to attempt a remote commissioning. So that can be organized. बाहर से लोग आ नहीं पा रहे हैं तो हमें इन हाउस टीम से ही पूरा हम काम कर रहे हैं
तो अभी हमने ऑनलाइन कैमरास हमने रखे हुए, उससे हमारे टीम काम कर रही है। हम ऑनलाइन उसको डेटा कनेक्ट करके हम पूरा PLC प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और काफ़ी हमें सक्सेस मिला है। नेक्स्ट वीक में हम पूरा ये कंप्लीट कर पाएंगे। Though the process is delayed because of the pandemic, there is still a big factor Balaji Wafers is counting on to sail through. It's people. Balaji Wafers employs more than 5,000 people across its factories, which run 24/7, 365 days a year. A lot of these employees have been with Balaji for over a decade and have been given the exposure to work on the latest machinery at the plants. यही हमारा स्ट्रेंथ है और यही हमें प्राउड फील होता है कि जो छोटे लेवल से भी हमारी जो टीम है, जो कोई MBA या तो कोई इंजीनियर IIT से बैकग्राउंड से नहीं है और सालों से खुद हैंड्स ऑन काम करते करते और बाहर के टेक्नीशियन के साथ इंटरेक्शन करके अच्छे से अच्छा टेक्निकल प्रॉब्लम भी अभी ये लोग सोल्व कर पाते हैं। Assembly done. The new production line is ready to get tested. Will it be smooth sailing? Or will it set alarm bells ringing for the folks at Balaji Wafers? Setting up a new potato wafers production line is par for the course at Balaji Wafers. But not in a year where a pandemic disturbed their best laid plans for the installation. And with the all-important festive season upon India, the team has their work cut out for them. When work resumed after the lockdown, all employees, old and new, had to be trained in health and safety, as well as food production. A time-consuming process, but one that needed to be done. अपन आलू का कलर है ये सेट किया हुआ है, ये जो सेम कलर है इसको ही वो पास करेगा। Globally, the potato wafers market is valued at $30 billion, and studies show that developing countries like India are driving consumption. The Balaji Wafers family is betting on this insight as they bring the latest automation in snacks production into their super factories. A new potato wafers line that will help increase their production capacity by 30%. Cementing their position as a strong player competing with international brands. Even before the lockdown, there was a shortage in our supply and we were not able to cope up with the demand. And due to the lockdown, the way people consume their snacks suddenly changed and people started consuming more of packet snacks. And due to that, our demand shot up to a level where we have never seen it before. And there was almost 50% shortage in supply. So that way, in order to cope up with the demand, we're going to use this new production line. The new line should have been installed and commissioned by mid-2020, but the pandemic came as a speed breaker, delaying the entire project by over 4 months. And now the team is working overtime to install and commission the line with just weeks left for the Indian festive season to begin. डिमांड तो काफ़ी बढ़ती है और हर साल बढ़ती है, तो जो हमें किसी भी हालत पे ये सीज़न में हमें प्रोडक्शन में आना है। ये जो 2020 का साल हमारे लिए है, ये एग्जैक्टली हमारे 2020 के क्रिकेट के फॉर्मेट के जैसा चल रहा है। इसके अंदर हमको लिमिटेड टाइम मिला हुआ है, जिसके अंदर हमको अपने कस्टमर्स को हमारे वेफर्स और नमकीन उनके हाथों तक पहुंचाना है। The new line is fully assembled finally and ready for a few crucial days of testing. और हम प्रोडक्शन ट्रायल लेंगे और होपफुली वी विल डू अ गुड प्रोडक्ट। हमारे टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छा इंस्टॉलेशन किया है और छोटे मोटे जो इश्यू है वो अभी हम 1 रन 2 रन के बाद थोड़ा सा भी हम मॉडिफाई करेंगे।
As the new wafers production line gears up for testing, running parallelly are the multiple production lines that bake, fry and roast over 50 types of snacks across a growing segment for Balaji wafers. We believe that if the product is good, if it's at the right price, if it's right quality and right quantity, you don't need to go out and like sell your product. It sells by itself. According to market research in 2019, the size of the Indian salty snacks market stood at over $390 million and the market is growing in double figures every year. Balaji Wafers understands this and takes this seriously. Taking inspiration from time-tested grandma recipes that are found in every home, the Indian Snacks Company is innovating new snacks on a regular basis. For instance, one of their best-selling products is Sev Murmura and its masala variant, producing nearly 3,000 tons per month. The key ingredient Sev is a thin, wriggly, crisp snack made of chickpea flour primarily. To make Sev Murmura, puffed rice is lightly roasted and mixed with sev and seasoned with a blend of Indian spices. मेरा तो फेवरेट है ये सेव मुरमुरा। इसमें जो लहसुन का फ्लेवर है ना वो लाजवाब है। Ideas for products like these come from extensive mixing and testing of snacks and flavoring at their R&D lab. All under the watchful eyes of Keyur. ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है कंपनी का। इट्स अ बैकबोन ऑफ आवर कंपनी। सो यहाँ पर जितने भी नए प्रोडक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे इनोवेट करते हैं और जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको कैसे और इम्प्रूव करें वो सब काम ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। तो नए नए फ्लेवर्स लाना और नए नए इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके जैसे कॉर्न है, राइस है, फिर अपना बाजरी है, ज्वार है, उसको कैसे लेके एक अच्छा न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बनाए। They don't rely on grandma's secret recipes alone. They also regularly bring in groups of people from their potential target consumers to taste and give their feedback about new products. And today, a special group of people have been invited for the tasting session. तो आज हमने हमारे घर वाले, हमारे फैमिली मेम्बर और हमारे घर के बच्चे को ही बुलाया है। आप समझ लो फैमिली मेम्बर है वो पार्शियलिटी नहीं रहेगी, जो भी है वो सीधा आपको आंसर देंगे। तो सबसे अच्छा फीडबैक हमें घर से ही मिल जाता है। Freshly made new snacks are given for tasting. And a feedback form to fill their comments in. I really like the Crunch X because of the taste and the texture, especially the texture, because it's like really a classic combination of the seasoning, and I really love eating it. हम यही चाहते हैं कि जो बाहर के वेस्टर्न स्नैक्स उसको हम यहाँ पे लाए, पर अपने इंडियन टेस्ट के साथ, अपने लोकल टेस्ट के साथ हम लोगों को प्रेजेंट करें। मसाले हमारे इंडियन है, अपने हैं, देसी है, और प्रोसेस जो है वो हम बाहर की लेके आते हैं। In line with bringing in new Western snacks into the Indian market, Balaji's newest introduction is Stack Up, a premium wafer that is made using potato flakes. Even the packing of these wafers is different from the rest of the products. Balaji claims to be the only Indian company that is making this kind of wafers in India. And like all their other products, Balaji has kept the pricing of the product lower than the competition while using the latest technology and machinery. The depalletizer is an example of cutting-edge technology being used to maximize efficiency. It's a robotic arm and it has just one job to do: remove the cardboard sheets separating layers of empty canisters sitting on wooden pallets and put them on the conveyor belt.
मेरा पूरा पैलेट आता है, उसको लेयर बाय लेयर डीपैलेटाइज करके ऑटोमेटिकली कैनिस्टर को लाइन के ऊपर प्रोडक्ट फिलिंग के लिए भेजता है। डीपैलेटाइजर इसीलिए चाहिए कि मैन्युअली 1 बाय 1 कैनिस्टर को हम किसी को टच नहीं करने देना चाहते हैं, तो पूरा मशीन एक साथ लेयर उठा के एम्प्टी कैन का लेयर उधर छोड़ देता है ताकि किसी का टच ना हो उसको, क्योंकि उसके अंदर हमें प्रोडक्ट फिल करना है। कैपेसिटी तो इसका काफ़ी ज़्यादा रहता है डीपैलेटाइजर का, लेकिन फ़िलहाल हमारी रिक्वायरमेंट है 9000 कैनिस्टर पर आवर, तो उसी हिसाब से हमने सेट किया है। यदि 20,000 25,000 कैन पर आवर की रिक्वायरमेंट है तो भी ये चल सकता है। At most Indian factories, the batter mixing process happens manually, but at Balaji, true to their mantra of automating and streamlining every process, this step is also getting a facelift through a process called continuous mixing. अभी हमने बालाजी वेफर्स में पहली बार रीडिंग बेकरी सिस्टम ली है, जिसमें साइलो से सीधा बेचिंग ऊपर से मिक्स होके सीधा ये मिक्सिंग स्क्रू है, जिसमें हम पानी और तेल मिलाते हैं, जहाँ से हम एक्सट्रूड होने के बाद फ्राई करते हैं। जो आउटपुट हमें 1800 से 1900 केजी मिल रहा है, जो पहले हमें सिस्टम में 1500 केजी पर आवर मिलता था। The key ingredient in the making of the wafers is potato, and a regular supply is a must if any production company has to meet the production process going. Since potatoes don't grow round the year, the prices of potatoes fluctuate from time to time depending on its supply. Besides, sometimes the supplies get stuck for unforeseen reasons. क्या बात कर रहे हैं आप? ट्रैफिक जैम हो गया है। राजू, આજે જે આપણે એસપી ચિપ્સની 5 ગાડી આવવાની હતી ને બટેકાની। But being in this business for decades means that Balaji wafers are ready for eventualities like these. Cold storage. हमारा कोल्ड स्टोरेज का कैपेसिटी 25,000 टन का है और हम उसमें 10 महीना तक आलू रखते हैं। बीच में जब भी कुछ ट्रक का स्ट्राइक या रोड चक्का जाम या रेट का कुछ इश्यू आता है तो हम उसमें से यूज करते हैं। The potatoes are treated to suppress sprouting and are stored at 9 degrees centigrade for the rest of their cold storage stay to make them last in their current state. बच्चा जैसे पैदा होता है और 6 साल का 7 साल का होता है, उसको जैसी संभाल रखनी पड़ती है, वैसा ही ये कोल्ड स्टोरेज में आलू की सब संभाल रखनी पड़ती है। Not all products that are made in the Balaji factories are made using potatoes. Nachos and pop rings are two products that Balaji Wafers has recently introduced in the market, a breakaway from its distinctly Indian snacks. The primary raw material is corn in the form of kernels for nachos and grit for pop rings. To make nachos, corn kernels from silos drop down into soak pits, where they soak for 12 hours before being cooked in a kettle. From here, it forms a dough in the hopper where it gets shaped into triangles, baked in an oven, fried and then seasoned. The factory also produces pop rings, a baked extruded product. There's a mesh extrusion that gives the snack its shape. And the production line consists of an oven to bake pop rings instead of frying. Most of the Balaji wafer snacks, they are Indian products. With the advance in the time and generation moving forward, we are trying to bring in some of the Western products into the market. So extruded snacks like pop rings, nachos, stackable chips, those are something which is new to the market.
And now the testing of the new plant is about to begin. Keyur is on a round at the factory floor of the new plant. Through testing, each step of the process will be under the lens as a batch of potatoes are put on the conveyor belt. The first couple of processes, including the elevator, seems to be working fine. This is a good start. But suddenly, an alarm goes off. ये जो बॉयलर के फ्लेम सेंसर का इश्यू था, कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, पर लकीली मैं जब राउंड पे था तब अचानक ये जो मॉइस्चर जो प्रोडक्ट का है वो अपने लिमिट से हाई हो गया था, तो अपने आप वो जो अपना जो रिजेक्शन मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो गया, तो पूरा प्रोडक्ट लकीली बाहर निकल गया. As the wafers come into the fryer part of the process, the oil inside needs to be 180 degrees. At this temperature, the chips get fried for 180 seconds to get their crispiness. If the temperature is higher or lower, the sensor will automatically reject this batch of chips, like in this case. अगर मॉइस्चर अपना रेंज से ज़्यादा होगा और रेंज से कम होगा, दोनों ही स्थिति में प्रोडक्ट खाने योग्य नहीं रहता है. With that issue sorted, testing continues. While making potato wafer seems fairly straightforward, there are other products that are far more complicated. They demand careful mixing of several ingredients in exact quantities. Tikha Meetha mix is made using 11 ingredients. Its main elements include chickpeas, cornflakes, peanuts, curry leaves, etc. Processing some of these ingredients takes hours before they pass through conveyor belts and seasoned to be sent forth to join the other ingredients. टमटम, इसका टेस्ट अलग रहेगा, ये गाठिया है, इसका अलग रहेगा, यानी सब जो भी प्रोडक्ट जो फुली ऑटोमेटिक प्लांट में हम बना के फिर इधर लाके मिक्स कर रहे हैं, और जो मिक्सिंग का वो जो पैरामीटर रहता है ना, तो उसमें जिस हिसाब से सेट किया पीएलसी में, उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट आएगी, बाद में मिक्स होके फिनिश पैकेट में पैक होता है. Testing at the new production line is on its second day and everything looks and feels like it's going fine. As the wafers come out of the fryer, they go through a crucial step where good chips are separated from bad chips. This happens with the help of an optical sorter, a contraption that visually scans wafers to make sure spotted or brown wafers go into the reject pile and the others proceed to seasoning. देखो ये है हमारा परफेक्ट पोटैटो चिप. इसका कलर पेल येलो है, राउंड शेप है और इवनली सीजनिंग कोटेड है, और ये एकदम करारा और फ्रेश है. Balaji Wafers is using cutting-edge, state-of-the-art automated machinery for its new wafers line. But will the wafers pass the stringent standards the in-house lab has set? The folks at Balaji Wafers are firing on all cylinders as they look to expand their production, presence and product range. Testing of the new production line is going well and all eyes are on the all-important online commissioning. But before that, one important test. बालाजी वेफर्स में एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट तरह की लेबोरेटरी है जिसमें हम केमिकल, फिजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं. ऑयल अपटेक एक अनदर पैरामीटर है जिसको कि हम चेक करते हैं. अगर ऑयल लिमिट से ज़्यादा रहा या कम रहा, दोनों ही स्थिति में वो सेंसरी में सही नहीं होगा, तो हम उसे चेक करके एश्योर करते हैं और डेविएट होने पे हम लाइन पे इन्फॉर्म करते हैं जिससे कि ऑपरेटर उस पर immediate action ले पाए. Before the new line gets flagged off for commercial production,
The company also wants to ensure the wafers are not carrying any pathogens that might cause any harm to the consumers. हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजिकल लैब एनालिसिस है जिसमें कि हम फूड में पैथोजेंस हैं कि नहीं ये एश्योर करते हैं। उसमें साल्मोनेला स्पीसीज़, ई कोलाई स्पीसीज़ हम चेक करते हैं और जनरल टेस्ट हम TBC, ईस्टर्न मोल्ड एंड टोटल कॉलीफॉर्म्स चेक करते हैं एंड एश्योर करने के बाद ही हम उसे प्रोडक्ट को मार्केट में देते हैं। For any food-related business, process effluent is a big factor. At Balaji Wafers, this effluent gets turned into a resource in their effluent treatment plant or ETP. The effluent that comes out of the process is put into the ETP, where it helps produce biogas. This biogas is used as a fuel in chillers that function like air conditioners and provide cold air to packaging areas of the factory. Testing phase is almost at its end. With a couple of minor tweaks, the line seems sorted and the wafers are coming out looking good. The packing machine has been installed but seems to be having starting trouble. हमारा इंस्टॉलेशन कमीशनिंग टीम हमारे पास यहाँ पे सेटअप है, बट कुछ केस में या तो बड़ा प्रोजेक्ट होता है या तो कुछ नया टेक्नोलॉजी या तो नया ऑप्शन मशीन में जब हमने ऐड किया है तो हम लोगों को जापान से सपोर्ट लेना पड़ता है। वो केस में हम लोग यहाँ से ऑनलाइन सपोर्ट इस बार ले रहे हैं क्योंकि वहाँ से अभी कोई आने की गुंजाइश है नहीं, कोई आ नहीं सकता है। तो अभी हम लोगों ने 1-2 वीडियो कॉन्फ्रेंस किए थे और ऑनलाइन सपोर्ट लेके भी हम लोगों ने काम कंप्लीट किया है। हेलो आकागिशी-san। Akagishi-san is quickly able to guide the engineers, and soon the state-of-the-art packing equipment is delivering neatly packed potato wafers. The 9 packing machines put together are spewing out around 1800 packets per minute. Once the potato wafers are packed into packets, they need to be boxed into cartons. This machine's robotic arm can push out 90 filled cartons every hour. Flat empty boxes are shaped into boxes, pushed onto a conveyor belt, dropped down from a level above into a cubicle with a robotic arm that fills in the necessary quantity of packed product, after which it is sent down another conveyor belt to be sealed and kept in storage. एक रोबोटिक मशीन हमें 1 घंटे में 50 कार्टून मिनिमम फिल करके देता है। उसके लिए पहले हम मैन्युअली काम करते थे और सबको पता है कि जैसे लॉकडाउन जब हुआ था तो मैन पावर में बहुत दिक्कतें आई थी, तो वही दिक्कत अभी हमें नहीं आ सकती है। उसके लिए वो भी एक हमारा अभी फ़ायदा है बीपीएम ऑटोमेशन मशीन रखने से। With increased production, the management at Balaji is glad that they invested in the most advanced auto storage and retrieval system, or ASRS. This is where all finished goods get packed into cartons and tucked away in what looks like a multi-level car parking system. This 9 floors of storage can store up to 500,000 cartons. हमारा ये जो ASRS है ये एक वर्ल्ड क्लास ASRS है। इस ASRS की साइकिल की शुरुआत बारकोड स्कैनिंग से होती है। इसके अंदर कंप्यूटराइज एल्गोरिदम है जिसके अनुसार हर प्रोडक्ट हर रैक पे जाके अलग अलग फ्लोर्स पे जाके जमा हो जाता है। यह इसलिए किया जाता है जिससे कि कंप्यूटर की द्वारा स्पीड मैक्सिमाइज की जा सके। And when it's time for the finished goods to hit the road, there's an advanced STV or sorting transfer vehicle that does all the thinking. जो भी मटेरियल डिलीवर करना है डीलर्स को, C&F को, उसके रिगार्डिंग हम लोग 1 दिन पहले हमको उसका परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर मिल जाता है। तो वो उसका जो भी डेटा है वो हम लोग हमारे सिस्टम में लोड करते हैं
तो उस जो लोड करते हैं तो डिस्पैच के दिन वो सारा मटेरियल हमारे स्टोरेज एरिया से 1 बाय 1 शॉर्टिंग होके कन्वेयर के थ्रू एसटीवी कलेक्ट करता है और वो बारकोड स्कैन करके पर्टिकुलर डीलर और C&F को डिलीवर करता है। A new normal, a new potato wafers line, a new way of commissioning, just on time. "2020 was turning out to be an unpredictable year for Balaji Wafers, where at the peak of the pandemic, they were left with an empty factory, overflowing products, and no manpower. For any company that wasn't so heavily invested in automation, this could have spelt doom." जब ये पैंडमिक आया और लॉकडाउन 1.0 आया तब हमारे पास अराउंड 30 करोड़ का स्टॉक था, लेकिन हमारे पास जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो एफिशिएंट है। डिस्पैच भी काफ़ी हमारे पास ऑटोमाइज्ड और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है डिस्पैच की। उसकी वजह से ये पैंडमिक के टाइम पे हमने वो 30 करोड़ का डिस्पैच बाकी 2 या 3 लोगों से ही पूरा डिस्पैच करके हमने मार्केट में वो चीज़ पहुंचाई। The team has pulled off an entire installation of potato wafers line online, adapting to the new normal that came with COVID-19, disrupting conventional practices. काफ़ी हमें अच्छा लगा कि हम ये चीज़ कर पाए और हम चाहते हैं कि नियर फ्यूचर में भी हम इसको यूज़ करें ताकि हम मेन मूवमेंट भी कम कर पाए। वहाँ से समझो बाहर से लोग आते हैं तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी खर्चा लगता है। तो जितना हो सके उतना रिमोटली आप मशीन को इंस्टॉल कर पाओ, चालू कर पाओ, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। And now with lockdown a thing of the past and the full force of their team and machines behind them, Balaji Wafers is all set to commission the new line. A delayed dream, but one that happened just on time. बहुत खुश हूँ। ये जो पीछे लाइन है वो नई लाइन, अभी प्रोडक्ट देखी कैसी प्रोडक्ट हो रही थी, एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट। तो ये अच्छी प्रोडक्ट है, एक हमारा नया बच्चा, नई प्रोडक्ट एकदम तंदुरुस्ती की तरह देख के हमको एक बहुत आनंद आया। For the second generation Virani entrepreneurs, this commissioning makes them a chip of the old block. Following the Sultan of Wafers into a future that is dotted with the latest in food automation, while being a self-reliant, made-in-India brand that thinks local and acts global.